Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel, Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries, and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 4, Anansi, and 5 from New Oxford Modern English, Book 4. Let's start today's lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. The first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 है, answer to the following questions. 10 questions हमें given है. A, what was the witch's name and why didn't she like it? B है, what was the witch doing in her garden? C है, why was Anansi pleased? D, what was the first animal that Anansi tricked? E है, which animals were not fooled by Anansi? F, what things could you buy in the market? G है, why was Mrs. Shrew going to the market? H है, why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? I है, how many characters are there in the story you have just read? Make a list. This question is more difficult. Discuss it first. ये मुश्किल है और इसको आपने डिस्कस करना है आंसर देने से पहले. Question है, what clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? Answers है. A, the witch's name was 5. She did not like it because all through her life people had just laughed or looked surprised when they heard that was her name. B है, the witch was stirring her big cooking pot and saying a spell in her garden. C है, Anansi was pleased because he heard the witch and he thought he would be able to use her spell to make some money or get some food. D है, the first animal that Anansi tricked was a Mrs. Rabbit. Next है E, Miss Frog and Mrs. Trio were not fooled by Anansi. F है, at the market you could buy yams, beets, pulses, grains, sweet potatoes, pies and mouth-watering delicacies. Next is G, Mrs. Trio was going to the market to try to sell the pies she had made. She wanted to buy some mouth-watering delicacies for her family at the market. H है, Anansi got angry with Mrs. Trio because she would not say the number 5. I had there are 6 characters in the story: the witch, Anansi, Mrs. Rabbit, Mr. Duck, Miss Frog, and Mrs. Shrew. The families of Mrs. Shrew and Anansi are also mentioned. And the last answer is a range of clues which tell us that Anansi was not a nice spider. He is a trickster, he scowls. His first thoughts upon hearing the witch are that he can use it to his advantage. He is dishonest, he tricks nice characters, he does not share his food, he does not think about his family, and he gets angry when things do not go the way he wants them to. The next question is question number 2. Fill in the blanks with suitable words from the story. Story से हमने suitable words को लेकर इन blanks को fill करना है. A है, Anansi was a trickster and he was having a dash time. B है, Anansi dashed through a gap in the witch's fence. C है, he imagined what dash foods he would find. D है, a dash sound pulled Anansi from his daydream. E है, she walked to the dash mount and stood on it. F है, Anansi dash and showed all his sharp teeth. Blanks में जो words हमने fill करने हैं वो है A, difficult, B, peaked, C, delicious, D, scurrying, E, nearest, and F, grinned. The next question is question number 3. Answer the questions about these lines from the story. Story से ये lines ली गई हैं और उनके बारे में हमने answer करना है. 1, 2, 3, 4 and this one that I am sitting on. इसके बारे में पहला क्वेश्चन है, who says these words? ये अल्फाज किसने कहे थे? B है, what is the speaker counting? C, why does the speaker say and this one that I am sitting on? And D is, what happens after this? Answer है A, Mrs. Trio. B, mounds of earth. C है, Mrs. Shrew avoids saying the number 5. She was not a fool. She guesses that Anansi is trying to trick her. She knows he wants her to say all the numbers, so she does not do it. D है, Anansi gets so cross that he says the number and disappears. यहाँ पे हमें एक चैलेंज दिया गया था कि आप स्टोरी का मॉरल बताएं. The moral of the story is that greed will bring you trouble. We could also say that causing trouble for others brings you trouble. The next section of exercise is section B, working with words. Number 1 है, see if you can find the answers to the following descriptions. Unscramble these 4 words to use in the spaces. Blanks में हमने इन words को fill करना है, लेकिन ये scramble है, इनको हमने unscramble करना है. A है, a person who treats people who are sick. B है, a person who looks after people in a hospital is a. C है, a person who helps children to learn is a dash.
एंड डी है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ इज़ अ डैश। सभी 4 वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करने के बाद हम लिख सकते हैं। ए में आएगा अ डॉक्टर, बी में अ नर्स, सी में टीचर एंड डी में है डेंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द फॉलोइंग पीपल। नीचे में पिक्चर्स गिवन है। राइट 3 और 4 सेंटेंसेज लाइक दोज अबव अबाउट द पीपल शोन बिलो। उनके बारे में हमने सेंटेंसेज लिखने हैं। हर कैरेक्टर के बारे में हम एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नंबर 1 है अ पर्सन हु क्लीन्स द स्ट्रीट्स, स्वीपर। नंबर 2 है अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सेलर। 3 है अ पर्सन हु मेक्स ब्रेड, बेकर। 4 है अ पर्सन हु ड्राइव्स अ टैक्सी, टैक्सी ड्राइवर। नंबर 5 है अ पर्सन हु कंट्रोल्स ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। The next question is question number 3. The opposites of these words are all in the story. Find them. Words हैं easy, nearest, unkind, displeased, appeared, loved, low, light and pleasant. Answer है A difficult, B furthest, C kind, D pleased, E disappeared, F hated, G high, H heavy and I unpleasant. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन। अ फुल स्टॉप इज़ अ पॉज, इट सेपरेट्स वन सेंटेंस फ्रॉम अदर। अ कॉमा इज़ ऑल्सो अ पॉज, इट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू शो अ शॉर्ट पॉज। An exclamation mark is used at the end of a sentence that expresses strong feelings or an important command. It looks like this. Inverted I जैसी शेप होती है इसकी। नंबर 4 क्वेश्चन है separate these sentences using commas, exclamation marks and full stops. Don't forget to start each new sentence with a capital letter. A है they watched as he shot an arrow. B है they were good archers, he was good at everything. Next है C, the dog did not die, it could not bark or eat. Next is D, I have 2 brothers, their names are Noman and Khalid. He has a sister, Aisha. Next is E, we like to swim every day, she does not. और F है how beautiful this city is. इन सभी सेंटेंसेस को पंक्चुएट करने के बाद हम देखते हैं। A, he shot an arrow, they just watched. B है they were good archers, he was good at everything. C है the dog did not die, it could not bark or eat. D है I have 2 brothers, Noman and Khalid. He has a sister, Aisha. E है we like to swim every day, she does not. The next section of exercise is section C, learning about language. हमारा topic है adverbs. An adverb is a word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb. An adjective, a phrase or another adverb. Example हमें given है Adil finished his homework quickly. Number 1 है choose suitable adverbs from the box to add to the sentences given below. हमें नीचे एक बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं। bravely, swiftly, smoothly, sweetly, yesterday, loudly, immediately, carefully, slowly, beautifully, painfully, straight, gracefully, tomorrow and angrily. सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ए है he wrote a letter to his sister. B है he faced the tiger which was leaping at his throat. C है the man with the bad leg climbed the mountain track. D है the arrow flew through the air at the target. E है I'm going to my father's house. F है the man with the bundle shouted at his donkey. G है the girl danced but did not sing at all. H है the boy speed down the steep road on his cycle. एडवर्ब्स अप्लाई करने के बाद हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ए है yesterday he swiftly or carefully wrote a letter to his sister. B है he bravely faced the tiger which was swiftly leaping angrily at his throat. C है the man with the bad leg slowly or painfully climbed the mountain track. D है the arrow flew smoothly or straight through the air at the target. Next है E, I am going to my father's house tomorrow or immediately. F है the man with a bundle shouted loudly or angrily at his donkey. G है the girl danced beautifully or gracefully but did not sing at all. और last है H, the boy sped straight down the steep road on his cycle. The next is writing questions. Number 2 है change the following into questions. A है a salesman can travel far. B है sodium benzoate has a particular smell. C है the hotel's room are not expensive. D है the cash drawer is full of notes. E है Sibi is a place in Balochistan.
और एफ है द सेल्समैन्स गुड्स आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट। इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन में चेंज करने के बाद इस तरह से होंगे। ए है कैन अ सेल्समैन ट्रैवल फार। बी है डज सोडियम बेंजोएट हैव अ पर्टिकुलर स्मेल। सी है आर द होटल्स रूम एक्सपेंसिव। डी है इज अ कैश ड्रॉर फुल ऑफ नोट्स। ई है इज सिबी अ प्लेस इन बलोचिस्तान। एंड एफ आर द सेल्समैन्स गुड्स ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट। The next section of exercise is section D, listening and speaking. What are my initials? Number one है to find the initials of the girl's name, the initial letters of her first name and surname. Follow your teacher's instruction. Listen very carefully. Mark the squares one at a time in the order that they are read out. Join the squares to form the initials letter from the name. यहाँ पे टीचर ने जो बॉक्सेस में वर्ड्स गिवन है इनको बोलना है और आपने उन बॉक्सेस को कलर करना है। फर्स्ट लेटर के लिए हम फर्स्ट बॉक्स में कलर करेंगे और सेकंड के लिए यानी सर नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए हम सेकंड जो हमें बॉक्स गिवन है उनमें कलर करेंगे। अगर किसी ने एच लिखना है जैसे तो SRITHJG इन्वर्टेड कॉमास 2A एंड Y को कलर करेंगे। और किसी का नाम अगर टी से स्टार्ट होता है सर नेम तो उसके लिए U4G3AQ फुल स्टॉप T एंड कॉमा। इसको अगर हम कलर करेंगे तो ये टी बन जाएगा। और इन बॉक्सेस को आपने बहुत केयरफुली वर्ड्स को या लेटर्स को सुनने के बाद कलर करना है बिकॉज लेटर्स की रेपिटेशन भी है और कैपिटल और कुछ लेटर कैपिटल हैं और कुछ स्मॉल हैं तो उसी हिसाब से आपने इसको कलर करना है और हर बच्चे के इनिशियल्स डिफरेंट होंगे। The next topic is what is cooking in the which is what. Number 2 question है we use recipes to know how to cook something. Read the recipe below and look at some other recipes. Talk about how a recipe is written. Do you know how to cook something? Write your own recipe of a dish that you like. Use the recipe below as a model. इस रेसिपी को जो हमें गिवन है इसको एज अ मॉडल यूज़ करना है अब जो भी आपको आपकी फेवरेट डिश है उसको कुक करने के लिए। Use imperative and transitional words to structure the recipe such as first, second, lastly, then, next, again, etc. Example को देख लेते हैं। Ingredients हैं 3 eggs, 1 tablespoon of milk, 1 tablespoon of oil, 1 teaspoon of oil, salt and pepper. Method है number 1. First, crack the eggs into a bowl, add the milk and a pinch of salt and pepper. Number 2 है next, use a fork to beat the eggs yolk. Tip the bowl gently and beat the eggs with the fork until the yolks and whites are combined and mixture has an even color. 3 है bring your pan to a high heat and add the oil. Then pour in the egg mixture and cook on a high heat for 2 minutes, making sure that the mixture is spread out evenly. Reduce the heat. Number 4 है cook the omelette for another minute, then loosen the edges with a spatula. Slide the omelette from the pan onto a plate, fold it in half. And number 5 last है serve. Remember to always wash your hands before cooking. खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोना ज़रूर याद रखें। इस मॉडल रेसिपी को देख के हमने जो रेसिपी बनाई है वो है इंग्रेडिएंट्स 2 eggs, 2 slices of bread, 1 tablespoon of butter, 1 tablespoon of mayonnaise, a pinch of salt and pepper, 2 slices of tomato ऑप्शनल है ये, 1 lettuce leaf ये भी ऑप्शनल है। मेथड देख लेते हैं। First, crack the eggs into a bowl, add a pinch of salt and pepper. Next, beat the eggs with a fork until well combined and smooth. Then place a pan on medium heat and melt the butter. Pour in the eggs and stir gently until they are softly scrambled. Turn off the heat. Again, take your bread slices and toast them until golden. Spread mayonnaise on one side of each slice. Next, place the scrambled eggs on one slice of bread. Add tomato slices and lettuce if you like. Lastly, cover with the other slice of bread and cut in half. Serve immediately and enjoy. The next section of exercise is section E, composition. Number 1 है write a conversation between Anansi and one of the animals he trick. Try to give each character at least 5 lines of dialogue. Set it out in the form of play script. एक ड्रामा या डायलॉग की शक्ल में इसको हमने पोर्ट्रे करना है। एग्जाम्पल हमें गिवन है यानी 2 कैरेक्टर्स लेने हैं और उनको दोनों को एटलीस्ट 5 लाइन्स हमने देनी है। एग्जाम्पल है Anansi sadly, oh hello Mr. Duck. Quack, good day Anansi, what's bothering you? हम सेम कैरेक्टर्स को ही लेके आगे चलेंगे। कैरेक्टर्स है Anansi, द स्पाइडर, मिस्टर डक।
Anansi, sadly, oh, hello there, Mr. Duck. You're looking well today. Mr. Duck, quacking happily. Good day, Anansi. I'm just on my way home from the market with some tasty treats. Anansi, that sounds wonderful, but before you go, would you help me count these piles of yams? Mr. Duck, curious. Yams? Sure, why not? How many piles do you have? Anansi, smiling. I'm not sure. That's why I need you to count them. Start from over here. Mr. Duck, counting aloud. One, two, three, four, five. Mr. Duck, suddenly fading. Oh, what's happening to me? Quack. Vanishes in a puff of smoke. Anansi, laughing to himself. And that's how a clever spider gets more yams for dinner. Next, given here number two, check through your work to make sure it is correct, lively and interesting. आपने इसको चेक करना है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो lively है, interesting है और correct है, उसमें कोई grammar mistakes नहीं है. Creativity है, draw a comic strip and put the dialogue in speech bubbles. एक comic strip बनानी है और dialogue को bubbles में लिखना है. इस तरह से आप भी एक comic strip बना सकते हैं और उसमें dialogues और characters add कर सकते हैं. Next is number three. While reading the text, we learn that Anansi is a greedy spider. He eats all the food himself and does not take any of it home for his children who are hungry. Greed is a bad thing. Can you think of a few reasons why? Write them down. You can start like, I think greed is bad because, और इसके बाद आपने अपना reason दे देना है. इसका आंसर है I think greed is bad because it makes a person selfish and unwilling to share with others. It can hurt people's feelings and make them unhappy. Greed can also cause fights and arguments between friends or family. It makes people care more about things than about kindness. And it can lead to losing trust and respect from others. नेक्स्ट हमें एक प्रोजेक्ट गिवन है अवॉइड टेलिंग लाइज अ फेबल एक स्टोरी है जिसमें बताया गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए इसको अवॉइड करना चाहिए. Anansi the spider lies to a lot of people for its own gain. We should avoid telling a lie no matter what. Read the following story carefully. स्टोरी को आपने बहुत मोहतात होकर पढ़ना है या बहुत एहतियात से पढ़ना है. लॉन्ग अगो बहुत अरसा पहले की बात है. देयर लिव्ड अ वुड कटर एक लकड़हारा रहता था इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में. ही वाज सिंसियर इन हिज वर्क अपने काम में बहुत मुखलिस था एंड वेरी ऑनेस्ट और बहुत ईमानदार भी. एवरी डे हर रोज़ ही सेट आउट इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट वो करीब के जंगल में जाता टू कट ट्रीज दरख्त काटने के लिए. ही ब्रॉट द वुड्स बैक इनटू द विलेज वो गांव में लकड़ियाँ वापस लेकर आता एंड सोल्ड देम आउट टू अ मर्चेंट और एक ताजिर को बेच देता एंड अर्न हिज मनी और इस तरह से वो अपना पैसा कमाता. ही अर्न जस्ट अबाउट इनफ टू मेक अ लिविंग और मुश्किल से इतना ही कमाता जिसमें उसका गुजारा हो रहा था. बट ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज सिंपल लाइफ लेकिन वो अपनी सादा ज़िंदगी से मुतमईन था. वन डे एक दिन वाइल कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर जब वो एक दरिया के करीब दरख्त काट रहा था हिज एक्स स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर गिर गई एंड फेल इनटू द रिवर और दरिया में गिर गई. द रिवर वाज सो डीप वो दरिया काफ़ी गहरा था. ही कुड नॉट इवन थिंक टू गेट इट बैक ऑन इट्स ओन और वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसको वापस ले सकता है खुद. He only had one axe उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी which was gone into the river जो कि दरिया में जा चुकी थी. He became very worried वो बहुत परेशान हुआ thinking how he will be able to earn his living now. और परेशान था कि अब वो अपनी रोज़ी कैसे कमाएगा. He prayed to God for his axe उसने गॉड से दुआ की प्रे किया कि उसको उसकी कुल्हाड़ी मिल जाए. He prayed so sincerely that an angel appeared और उसने इतने मुखलिसाना तरीके से दुआ की कि एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ. When the angel asked the woodcutter जब उसने फ़रिश्ते ने लकड़हारे से पूछा what the problem was कि क्या मसला था. He told him the whole episode उसने उसको पूरी कहानी सुना दी. The angel then put his hand into the river फिर उस फरिश्ते ने अपना हाथ दरिया में डाला and took out a silver axe चांदी की कुल्हाड़ी निकाली. The woodcutter said it wasn't his उसने कहा कि ये मेरी नहीं है. The angel continued looking and then found a golden axe और उसने एंजल ने अपनी तलाश जारी रखी और उसने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली. The woodcutter refused to accept it too और लकड़हारे ने उसको भी लेने से मना कर दिया. What good is a golden axe to a poor woodcutter? He needed his iron axe. उसने कहा कि ये क्या मेरे लिए अच्छा होगा मुझे तो अपनी लोहे वाली जो कुल्हाड़ी है वही चाहिए जो मेरी खो गई है. The angel finally smiled and pulled out his iron axe. अब यहाँ पे जो एंजल है वो मुस्कुराया और उसने उसको उसकी आयरन एक्स निकाल कर दे दी. The woodcutter was extremely happy. अब लकड़हारा बहुत खुश था and thanked God for returning his axe और उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उसको उसकी कुल्हाड़ी वापस मिल गई है. The angel was very happy. फरिश्ता बहुत खुश था विद हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी से. सो ही रिवार्डेड हिम बाय गिविंग हिम द सिल्वर एंड गोल्डन एक्स टू. अब उसने उसको चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी दे दिए इनाम के तौर पर. द वुडकटर वाज ओवरवेल्म्ड एंड जंप्ड विद जॉय. अब लकड़हारा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुशी से उछलने लगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी
वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो हमें सच बोलना चाहिए और ईमानदारी दिखानी चाहिए। एनी गेन मेड थ्रू डिसऑनेस्टी इज़ शॉर्ट लिव्ड। कोई भी फ़ायदा जो हम डिसऑनेस्टी या बेईमानी करके हासिल करेंगे वो कम अरसे के लिए होगा। नीचे हमें दो सेक्शंस गिवन हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन का। क्रिटिकल थिंकिंग है, डू यू थिंक द एंजल वुड बी हैप्पी, कि आप क्या सोचते हैं कि एंजल खुश होता इफ़ द वुड कटर एक्सेप्टेड द सिल्वर एंड गोल्डन एग्स, अगर लकड़हारा उससे सोने और चांदी के कुल्हाड़े ले लेता। और इमेजिनेशन भी है, आपने इमेजिन करना है दैट द वुड कटर हैज़ एक्सेप्टेड द गोल्डन एग्स, कि उसने गोल्डन एग्स को एक्सेप्ट कर लिया है फ्रॉम द एंजल फरिश्ते से, एंड वेंट होम हैप्पीली, और घर वापस चला गया खुशी खुशी। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन व्हाट यू थिंक विल हैपन टू द वुड कटर, हाउ विल हिज लाइफ हैव चेंज्ड। आपने बताना है कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो जाती है अगर वो ऐसा करता तो। क्रिटिकल थिंकिंग वाले सेक्शन का आंसर है, आई डोंट थिंक द एंजल वुड बी हैप्पी इफ़ द वुड कटर एक्सेप्टेड द सिल्वर एंड गोल्डन एग्स, बिकॉज दैट वुड मीन ही वॉज बीइंग डिसऑनेस्ट। द एंजल वांटेड टू टेस्ट हिज ट्रूथफुलनेस, सो टेकिंग समथिंग दैट वाज नॉट हिज वुड हैव शोन ग्रीड इंस्टेड ऑफ ऑनेस्टी। और इमेजिनेशन वाले पोर्शन का आंसर है, इफ़ द woodcutter had accepted the golden eggs, he might have become greedy and lazy, stopping his hard work. People in the village might lose interest in him, and he could end up unhappy despite having wealth. His honest and simple life would be gone. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.